चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है प्रपोज बाय H.E. हक्सली एंड A.F. हक्सली। कब? 1954 में। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपके पास आ जाएगा, when a muscle contracts, the actin and the myosin filaments undergo specific types of shifting and they slide past each other. Now look here, this is the A band and the I band is sliding over and the A band has shifted. इनके जो sizes हैं they do not change, only position थोड़ा सा change हो जाता है, जिसकी वजह से sarcomere जो है वो shrink कर जाता है थोड़ा सा। ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होता है, वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। The Z lines are brought closer. Look here, the Z lines are brought closer. The I band shortens and the H zone disappears. Z lines जो हैं they come closer. H zone disappears and then आपके पास I bands जो हैं वो shorten हो जाते हैं. The cross bridges attached to the actin. Cross bridges क्या हैं? The globular heads of the myosin. They attach to the actin filaments and pull the actin towards the center of the sarcomere. ठीक है? The actin filaments attach to the globular heads of the myosin and then they pull them towards the center of the sarcomere. ठीक है? Next चलते हैं. How the bridges are controlled. In the resting muscle, the binding sites of the myosin filaments are covered by the tropomyosin. In a resting filament, a muscle that is not contracting, उसके अंदर आपके पास जो है, the binding site is always covered by tropomyosin. On stimulation, the calcium stimulation कैसे हुई है, जो neuromuscular junction है, the calcium is released from the sarcoplasmic reticulum and it binds to the troponin molecules, which moves slightly and displaces the tropomyosin, exposing the binding sites on the actin. ये मैंने explain कर दिया हुआ है पहले, ठीक है। जो आपका TNC है वो कैल्शियम के साथ अटैच करेगा और वो अपनी जगह से थोड़ा सा हटेगा और क्या करेगा, बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन को एक्सपोज कर देगा, व्हिच इज कवर्ड इन द रेस्टिंग स्टेट ऑलरेडी. ATP हाइड्रोलाइज फॉर अटैचमेंट एज वेल एज डिटैचमेंट ऑफ ब्रिजेस, जो रिगर मॉर्टिस मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो ये उसमें हेल्प आउट करता है. नाउ लुक हियर, ये TNT है, ये TNC है, ये TNI है. मायोसिन बाइंडिंग साइट है ब्लॉक्ड बाय ट्रोपोमाइसिन, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, बट वंस कैल्शियम के साथ ये अटैच हो जाएगा, दिस बाइंडिंग साइट इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड. And when the calcium binds with the TNC, the tropomyosin moves and the myosin binding site attaches. ये एक्टिन के ऊपर है और यहाँ पर फिर आपके पास क्या है, यहाँ पर ये ग्लोबुलर हेड जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा. ये ग्लोबुलर हेड अटैच हुआ, इसने इसको आगे की तरफ पुल किया और ये देखें, ये आगे की तरफ इसने शिफ्ट करना शुरू कर दिया आपके मसल को. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ लुक हियर, this is actually the structure of the sliding filament model. ये uncontracted state है और ये contracted state है. Uncontracted state में आप ये देखेंगे, this is the normal size of the A band, this is the H zone, this is the M line in the center, this is the I band, and this is the Z line. These are the Z lines of two consecutive sarcomeres, myofibrils, और ये जो पूरा जो है, this is known as a sarcomere. In a contracted state आप देखें कि I band shorten हो जाता है, आपका जो H zone है वो disappear हो जाता है, sizes remain the same लेकिन overlapping हो जाती है. ये globular heads इसको पकड़ के खींचना शुरू करते हैं towards the center, towards the M line. These globular heads will start to pull this actin towards the center line, जहां पर फिर क्या है कि इनकी अटैचमेंट जो है वो हो जाएगी. ठीक है. At rest, the tropomyosin covers the myosin head site and the actin molecule. During contraction, calcium binds with the troponin and displaces it. Myosin head binding sites are exposed and ATP is hydrolyzed during this process. Muscle contraction is initiated by a nerve impulse. The sarcolemma of the muscle fiber penetrates deep into the cell, forming a transverse tubule, which is a T-tubule, collectively known as the T-system. The nerve impulse passes through the sarcoplasmic reticulum through the T-tubule. Calcium gates in the sarcoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum को sarcoplasmic reticulum करते हैं मसल के अंदर. Open, releasing the calcium into the cytosol, thus binding with the troponin of the
फिलामेंट TNC के साथ बाइंडिंग होगी. बाइंडिंग साइट्स आफ्टर दिस कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम इज एक्सपोज एंड द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड कंट्रैक्शन कंटिन्यूस. ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा. यहीं तक इसको हम आज रखते हैं. बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए.